Sahasrabahu Arjuna was a warrior who easily defeated even Ravana, the king of Lanka. Sahasrabahu Jayanti is celebrated every year on the 7th day of the bright fortnight of the Kartik month. Sahasrabahu Arjuna was a Chandravanshi king. He had many names, such as Hayadipati Sahasrarjuna, Dashagri Vijay, Sudasena, Chakravatar, Sapt Dravapati, Kritvirya Nandan, Rajashwar, etc. But do you know whose incarnation Sahasrabahu Arjuna, also known as Kartivirya Arjuna, was and how powerful he was? Before continuing with the video, if you are a true devotee of Bajrangbali, please like the video and write Jai Bajrangbali in the comments section. Sahasrabahu was born from the womb of Mother Padmini in the 10th generation of Maharaja Haya. His birth name was Ekvar. Being the son of Maharaja Kritvirya of the Chandravanshi dynasty, he is called Kartivirya Arjuna. Kartivirya Arjuna pleased Lord Dattatreya, an incarnation of Lord Vishnu, with his devotion. Lord Dattatreya blessed Kritvirya with the strength of 1,000 hands during battle, leading to his name Sahasrabahu Arjuna. His ancestors were the Mahinsmantas, who founded the city of Mahishmati, modern Maheshwar, on the banks of the Narmada. Later in this lineage, after Durdam, Kritvirya, the eldest of Kanaka's 4 sons, ascended the throne of Mahishmati. Brahmins of the Bhargava clan were his royal priests. The Bhargava chief, Maharishi Jamdagni, who was the father of Lord Parashurama, the 6th incarnation of Lord Vishnu, had a close relationship with Kritvirya. The Bhagavata Purana describes the origin story of Sahasrabahu Maharaja. He performed rigorous penance to Lord Vishnu, received 10 boons, and assumed the title of Chakravarti Emperor. According to another legend, Sahasrabahu Arjuna was actually the complete incarnation of Lord Vishnu's Sudarshan Chakra, which has 1,000 spokes. Therefore, Sahasra Arjuna had 1,000 hands, or 1,000 arms. Speaking of his strength and valor, he once easily defeated Ravana, the king of Lanka, in battle. Defeating Ravana is considered impossible. He even defeated Indra, the king of the gods. All the gods feared him. However, in our Sanatan Dharma, there are 6 great warriors who even defeated Dushasana. One of them is Sahasrabahu Arjuna. A fierce battle once took place between the king of Mahishmati, Sahasrabahu Arjuna, who possessed thousands of hands, and Ravana, the 10-headed king of Lanka. In this battle, Sahasrabahu Arjuna, with the help of his 1,000 arms, stopped the flow of the Narmada river and released it towards Ravana, sweeping Ravana along with his entire army. He then captured Ravana. Later, at the request of Ravana's grandfather, Maharishi Pulashya, Ravana was released. Ultimately, Ravana made him his friend. Ravana's birth name was Dashagriva. Sahasrabahu Arjuna was named Dashagriva Vijay for defeating Dashagriva. He was also known as the Chakra Avatar because he was the incarnation of Lord Vishnu's Sudarshan Chakra. Sahasrabahu Arjuna was a highly prolific warrior, capable of defeating 24 warriors simultaneously. He was killed by Lord Parashurama, the 6th incarnation of Lord Vishnu. According to the legend, according to Brigutra researcher and literary scholar Shiv Kumar Singh Koshiki, one of the regional kings whom Lord Parashurama fought was a kinsman of the Havanshi king Sahasrarjuna, with whom his father, Maharishi Jamdagni, had a dispute over his mother Renuka. According to the legend,
In this dispute over his mother's relationship, he beheaded her on his father's orders, leading Kartivirya Arjuna to become an enemy of Lord Parashurama. Another legend states that Sahasrarjuna was killed because Maharishi Vashistha became food for a snake. Arjuna then saw a Kapila Kamadhenu cow in the ashram of Maharishi Jamadagni, Lord Parashurama's father, and in his desire to obtain it, he brought it from the Balpuka ashram. It is believed that this Kamadhenu cow was a manifestation of the Supreme Being himself, granting whatever was asked of him. He even granted Amrita, nectar of immortality, when asked. When Lord Parashurama learned of this, he decided to retrieve the Kamadhenu cow to honor his father and fought with Sahasrarjuna. Sahasrarjuna's arms were severed and his head was also severed in the battle. It is also said that at that time, the Haya dynasty kings were oppressive. There was a long-standing rivalry between the Bhargava and the Haya dynasty. The Haya dynasty king, Sahasrabahu Arjuna, used to persecute the sages of the Bhargava dynasty. Once, Sahasrabahu Arjuna's sons came to Jamadagni's ashram to take the Kamadhenu cow and kill their father, Maharishi Jamadagni, in order to take revenge on Lord Parashurama. When Lord Parashurama learned of this, he swore in anger to destroy the Haya dynasty of Kshatriyas. In keeping with this vow, he fought with this clan 36 times, completely destroying them. Since then, the myth has spread that Lord Parashurama had destroyed regional clans 36 times. In reality, Sahasraba Arjuna was a good king. However, as he grew more powerful, his thinking power diminished and, fueled by arrogance, he engaged in unrighteous acts. To eradicate this unrighteousness, Lord Vishnu, in his 6th incarnation as Lord Parashurama, killed him. Actually, Lord Vishnu had 3 forms: Mahavishnu, a form of the Supreme Brahman himself. The second, Garbhodakshaya Vishnu. Garbhodakshaya Vishnu was the Vishnu from whose navel the Supreme Father Brahma himself was born, and on whose lotus garland all the 14 worlds reside. The third form was Ksharodaksha Vishnu. Ksharodaksha Vishnu is the Vishnu who is known as the preserver of the universe. He has taken 24 incarnations on this earth, of which his 10 major incarnations are called Dashavatara. All these stories are described in the Vishnu Purana. Lord Parashurama is one of the greatest devotees of Lord Shiva, the god of gods. He pleased Mahadev through his penance and received him as his guru. Lord Shiva bestowed upon him all the knowledge and weapons of this world. Lord Parashurama is one of the 7 immortals. He still resides on the Mahendragiri mountain in Osa. Lord Parashurama's most powerful weapon is his divine animal, which he obtained by pleasing Mahadev. In the Shiva Mahapuran written by Maharishi Vedvyas, it is described that Lord Sadashiv has 3 forms, which are Sadashiv, Mahesh and Rudra. Sadashiv is said to be the formless supreme form of Shiva. Mahesh is the peaceful form of Shiva and Rudra is the destructive form of Shiva. Param Brahma Sada Shiva is beyond the infinite universe and Lord Shiva is that form of his in which we see him meditating on Mount Kailash. I hope you all liked this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to the video and do write Jai Bajrangbali Jai Parashuram in the comment section. Thanks for watching. Har Har Mahadev, Om Namah Shivaya. त्रेता युग का वो गौरवशाली इतिहास जिसे हम लगभग भूल ही चुके हैं। क्या हम उस सम्राट को जानते हैं जिसने त्रेता युग में रावण को भी बंदी बना लिया था? आज हम उसी महान राजवंश है ये वंश की कहानी जानेंगे। है एक प्राचीन और प्रतापी क्षत्रिय राजवंश था और इनकी राजधानी थी माहिष्मति, जो पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसी थी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये इतिहास हमारे पवित्र पुराणों में दर्ज है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत, इन सभी में इस वंश का उल्लेख मिलता है। इस वंश के सबसे महान सम्राट हुए महाराजा कार्तवीर्य अर्जुन। उन्हें भगवान शस्त्रार्जुन भी कहते हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या से उन्हें सहस्त्र भुजाओं का अद्भुत वरदान मिला। अपनी सहस्त्र भुजाओं और दिव्य अस्त्रों के बल पर वो अजेय हो गए। उनका पराक्रम अतुलनीय था, कोई भी उनके सामने टेक नहीं पाता था, और इसी पराक्रम से उन्होंने दशानन रावण को भी पराजित कर बंदी बना लिया था।
इस पूरी घटना का वर्णन स्वयं विष्णु पुराण में मिलता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी अपनी एक जीवित विरासत है। और आज भी कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार समाज, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। हम आज भी अपने महान पूर्वज भगवान सहस्रार्जुन की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। उनकी चालीसा और आरती हमारी उस जीवंत परंपरा का प्रतीक है। वो हमारे लिए सिर्फ पूर्वज नहीं, बल्कि हमारे आराध्य देव हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी विरासत की वापसी है। जय भगवान सहस्रार्जुन, जय है वंश। श्री राजराजेश्वर कार्तिवीर्यार्जुन जन्म कथा एवं अनंत व्रत का महत्व, दैवीय परिचय और उत्पत्ति। सुदर्शन चक्र के अवतार कार्तिवीर्यार्जुन को प्राचीन ग्रंथों में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। महान चंद्रवंश कुल, वे है वंश के राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री के पुत्र थे। अनंत व्रत एवं साधना विधि, पुत्र प्राप्ति हेतु अनंत व्रत। ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी के परामर्श पर रानी शीलधना ने पुत्र प्राप्ति के लिए वह कठिन व्रत किया था। 12 महीनों का विशेष अनुष्ठान, मार्गशीर्ष से कार्तिक तक प्रत्येक महीने के नक्षत्रों के अनुसार भगवान विष्णु के अंगों की पूजा की जाती है। व्रत के लाभ और फल, इस कथा के श्रवण और व्रत के प्रभाव से 7 जन्मों के संतान कष्ट दूर होते हैं। नमोस्तु कार्तिवीर्याय, इस मंत्र के उच्चारण और स्मरण से खोई हुई वस्तुएं और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। महाराजा कार्तिवीर्य अर्जुन, गुरु कृपा और आदर्श शासन। अर्जुन ने आश्रम में विनम्रता पूर्वक सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर गुरु ने उन्हें 9 दुर्लभ वरदान दिए। युद्ध के समय अर्जुन को 1000 शक्तिशाली भुजाएं और अपराजेय होने का वरदान प्राप्त हुआ। उन्हें दूसरों के मन की बात जानने और पाताल, पृथ्वी व आकाश में अबाध गति की शक्ति मिली। राजा ने घोषणा की कि उनके अलावा कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, जिससे चोरी और हिंसा का अंत हुआ। देवताओं, ऋषियों और पवित्र नदियों के जल से अर्जुन का भव्य राज्याभिषेक। जय सहस्त्रबाहु, जय है वंश। धन्यवाद। Hello. In the Uttarakanda of the Valmiki Ramayana, there's an episode that most people don't know. Ravana, who had defeated Yama, Kubera, and Varuna, reached Mahishmati on his conquest. His goal was to challenge King Kartavirya to battle. But the king wasn't in Mahishmati at the time. He was on the banks of the sacred river Narmada, where the peaks of the towering Vindhyachal mountains touch the sky. The crystal clear Narmada flows toward the western sea. Thirsty lions, elephants, and wild animals quench their thirst in the Narmada's cool reservoirs. Ravana announced to his ministers, "I am Ravana. I have come to fight the king." The ministers calmly replied, "The king is currently out for water sports with his wife." Ravana had to wait, and when the king returned, that episode will be recounted in the next part. कलचुरी वंश का एक गौरवशाली इतिहास है। इसे कलार, कलाल और कलवार नामों से भी जाना जाता है। हम इसकी मौलिक उत्पत्ति पर दृष्टिपात करें तो विष्णु पुराण और मनु परंपरा के अनुसार श्री ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अत्रि और सती माता अनुसुईया से चंद्र उत्पन्न हुए। चंद्र और महारानी तारा से महाराजा बुध हुए। इसी क्रम में महाराजा पुरुरवा हुए, जिन्होंने अपने पूर्वजों के तर्पण हेतु मां नर्मदा को भूमंडल पर अवतरित किया। पुरुरवा से महाराजा आयु, उनसे नाहुष और नाहुष के पुत्र महाराजा ययाति हुए, जिनके पुत्र महाराजा यदु। यहां राजा यदु के 5 पुत्रों में महाराजा सहस्त्रजीत हुए। महाराजा सहस्त्रजीत से महाराजा सत्यजीत और उनसे महाराजा है हुए, जिनसे है वंश आरंभ होता है। यहां तक आते आते महाराजा चंद्र से आरंभ चंद्रवंश की 14 शाखाएं हो जाती हैं, जिनमें से है वंश भी एक शाखा है। है वंश में ही 8वीं पीढ़ी में महाराजा महिष्मान हुए, जिन्होंने कलचुरी वंश की कुल राजधानी महिष्मती अथवा महेश्वर को बसाया। महाराजा महिष्मान की 8वीं पीढ़ी में महाराज कृतवीर्य हुए,
जिनकी महारानी सरमा देवी या पद्मिनी, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। इनसे राजराजेश्वर श्री सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्यार्जुन जी का जन्म हुआ, जो कि कलचुरी वंशियों के साथ साथ अनेक वंशों के आराध्य देव भी हैं। इन्होंने भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर अनेक वरदान प्राप्त किए, जिनके कारण ये योगेश्वर स्तुतिगामी हुए और श्री सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र अवतारी थे। ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु से पूर्व कालक्रम के नाम से भगवान शंकर के पास था। इसलिए श्री सहस्त्रबाहु को धन का देवता या समय का देवता भी माना जाता है। श्री सहस्त्रबाहु की वंश परंपरा में अनेक महान महाराजा हुए, जैसे महाराजा तालजंग, महाराजा अवंती। यहां आते आते है वंश भी 18 शाखाओं में विभक्त हो गया। है क्षत्रियों के कलचुरी नामकरण के संबंध में अनेक प्रमाण और तर्क मिलते हैं। कलार, कलाल, कलवार, कलचुरी आदि शब्दों की उत्पत्ति काल्यपाल शब्द से या संस्कृत के कालचूर्य शब्द से बताई जाती है। इन कलचुरियों में महाराजा सुद्युमन हुए, जिनके 3 पुत्र नीलध्वज, मयूरध्वज और हंसध्वज थे। इनके वंशजों ने बहुत समय बाद 6वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक 1200 वर्ष भारत के किसी न किसी भाग में शासन किया, जो कलचुरी काल के नाम से जाना जाता है। किंतु 18वीं सदी के आसपास इन कलचुरियों का पतन काल आरंभ होता है और अनेक कारणों से यह कलचुरी लगभग 1000 उपवर्गों में बट गया है, जिनमें से लगभग 556 उपवर्गों की पहचान हो सकी है। ये उपवर्ग 4 धर्मों हिंदू, सिख, ईसाई व जैन को मानने वाले हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। यदि ये समस्त वर्ग उपवर्ग एकीकृत हो जाते हैं तो निश्चित ही भारतवर्ष के पटल पर एक सशक्त आर्थिक, सामाजिक और जो न केवल अपने समाज जनों के उत्थान में सहयोग कर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और दोस्तों, हम लोग अभी आए हुए हैं, मंडला घूमने आए हुए हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेसेस हम लोग दिखाने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट प्लेस हम लोग आए हैं सहस्त्रधारा। यहाँ पर हम लोग आए हैं सहस्त्रबाहु जो मंदिर है वहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर और भी जगह है घूमने वाली, तो वो हम आपको दिखाएंगे अभी, मतलब अलग अलग ब्लॉग में दिखाते जाएंगे। अभी आप यहाँ से व्यू देखिए, नर्मदा जी का कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी हम लोग उस साइड भी जाएंगे, वहां पर का भी व्यू आपको दिखाएंगे, वाटरफॉल वगैरह का भी। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पे सुन सकते हैं कितनी शांति है, किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं है यहाँ पे, और कितना खूबसूरत वातावरण है यहाँ का। आप यहाँ पर दोस्तों गाड़ी से आसानी से पहुँच सकते हैं और आपको गूगल मैप से इजीली आप पहुंच सकते हैं। गूगल मैप से आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी यहां तक आने में। और अभी हम लोग जा रहे हैं सहस्त्रबाहु मंदिर की तरफ। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। दोस्तों देखिए नर्मदा जी का कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, मगर कचरा भी जमा हो गया है ना ये। रेत, पत्थर, मिट्टी। मंदिर ये वाला डूबा हुआ है। सहस्त्रबाहु श्री राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु मंदिर है दोस्तों ये, और ये डूबा हुआ है अभी, तो अपन इतना ही देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है सहस्त्र अर्जुन भगवान जी का मंदिर, और मंदिर के अंदर दोस्तों शिव भगवान जी की मूर्ति है। अभी मंदिर में पानी भरा हुआ है, तो अभी हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। और इस मंदिर सहस्त्र अर्जुन जो मंदिर है, इसको लेकर भी एक कथा प्रचलित है, वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में या कभी और वीडियो बना के डालूंगी उसके बारे में।
और ये जो जगह है दोस्तों, ये बरगी बांध का भराव क्षेत्र है। मतलब ये लास्ट बरगी बांध का है, यहाँ तक पानी बरगी बांध का भरता है। और यहाँ पे देखिए शंकर जी की जो शिवलिंग है वो भी डूबे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है नर्मदा जी का। ये देखिए यहाँ पर भी ये मंदिर है, ये आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ से चारों तरफ का आप व्यू देखिए, बहुत खूबसूरत व्यू है। ये देखिए ये चारों तरफ का व्यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो। The existence of the city of Mahishmati is not completely fictional. Many authors and researchers have mentioned the ancient city of Mahishmati, which may have flourished till as late as the 13th century. It is said that Mahishmati was the most important city in the southern part of the Avanti kingdom, located on the banks of the river Narmada in present-day Madhya Pradesh. The city was the erstwhile capital of the Haihai, an ancient federation of 5 clans under the rule of King Kartavirya Arjun, also known as Shri Sahasrarjun, who has been described in the Mahabharata as Lord of this whole world living in Mahishmati, and he who has 1,000 arms. Mahishmati, which means the abode of Mahesh or Lord Shiva, is one of the oldest civilizations of India. The city has found its mention in the great Indian epics, the Mahabharata and the Ramayana. In the Mahabharata, the city of Mahishmati was ruled by the Nishad king Nila. Agni, the god of fire, was in love with Nila's daughter and took the form of a Brahmin to woo her. When the king found out about this courtship, it caused him extreme fury. "Punish this Brahmin for his misconduct," ordered King Nila. At this, Agni took off his disguise and flamed up in wrath. Fearing the impending destruction, King Nila begged, "O mighty Agni, forgive me for my folly." He also requested Agni for the protection of his kingdom, to which Agni conceded. Many years later, when Yudhishthir embarked on conducting a yagna to conquer everyone on earth, his younger brother Sahadev, knowing that Agni was protecting Mahishmati, prayed to him for success before they invaded the city. The Ramayana also makes mention of the ancient city in its chapters. According to a legend, King Sahasrarjun and his 500 wives had once gone to play by the Narmada river. To provide his wives with a greater area to play in, the king, using his 1,000 arms, stopped the flow of water. At this time, Ravan, who was flying by, saw the open ground, descended and decided to pray to Shiva. When the wives were done playing, Sahasrarjun let the water of the mighty river flow. Ravan, who was deep in his prayers, got furious when the sudden gush of water washed away his shivling. Enraged by this, Ravan attacked Sahasrarjun, who in turn pinned Ravan to the ground and placed 10 lamps on his 10 heads and one on his hand. It is said that Ravan was confined as a wild beast and enslaved in the city of Mahishmati. Since then, Mahishmati, also known as present-day Maheshwar, has attained historical significance as it marks the capture and the defeat of Ravan. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright.